and also the girls hostel with 550 rooms. Then we have the field infrastructure, well established nursery with high-tech structures. We have the polyhouses, mist chambers, and some containerized receiving block also. Tractor is there, pillars are there, nursery equipments are there, pond for the irrigation purpose. Academic section of the Faculty of Forestry. I welcome all of you on this introduction program. I'm here going to discuss or give you the brief introduction about the academic program of this Faculty of Forestry. Actually, this is the structural program of our degree program as per the NEP, where you can see you are admitting here in the Faculty of Forestry. Any college, you are admitting here in the Faculty of Forestry. In the first year, we are having the 2 semesters because everything is written as a neat and clean, and there is no correction in this card. Okay, this one is rejected. You can see the course registration cards must be filled carefully. Then the second one is the register only the courses approved for the semester. Course allotment होती है, वही course आपने allotment जो हुई है first semester के लिए, चाहे second semester के लिए, चाहे आपके third semester में हो, जो allot हुए हैं वही आपने register करने के पास आपको recommend करवाना है कि जिसके पास आप कोर्स, ताकि उसको भी पता चले ना कि भाई आपने मेकअप लेना है एक जैसे. तो तभी हम कर रहे हैं कि भाई हर कोई कॉलेज में यूनिफॉर्म है, हम भी आपको ये कर रहे हैं कि भाई आप भी उससे डिसिप्लिन आता है यूनिफॉर्म की वजह से, तो आप ये आपको लाना. So you can see here we have 2 hostels, boys and girls, and with the accommodation in Pine Boys we are having 22 rooms in these floors, and this becomes total 44, and we have double occupancy, so that means we are having 88 these arrangements for these boys in Pine Boys hostel. We 2 wardens here, Dr. Meghna and Dr. Makbul, myself. Next. So why we frame these rules? As you know, whenever we are having any institution organization, there should be some rules so that we can have this particular discipline. As safety and dignity of women at workplace is not just a policy requirement, but a fundamental right. In 2026, as we strive toward a more developed economy, the active participation of women is not optional, it is essential. However, for this participation to be meaningful, every woman must feel secure, respected and valued, free from the fear of harassment or discrimination. कॉलेजेस में, घर में, कहीं पर भी होती है. मतलब ये सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ नहीं होता कि बोलेंगे सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ होता है, ये टीचर्स के साथ भी होता है, दोनों में होता है. अब बोलेंगे मैम शायद यहाँ बोलेगी स्टूडेंट्स के फेवर्स में होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो टीचर्स के नाम दे देते हैं. ठीक है. अब दूसरी बात आती है, आप किसी पे हंसते हो. अब बोलोगे हैरेसमेंट किस किस चीज़ पे आता है. अननेसेसरी आप किसी लड़की पे हंस रहे हो. ठीक है. अननेसेसरी आपने किसी लड़की को ऐसे टच किया, हाँ, किसी के सामने कमेंट बोल दिया. जैसे आप चलते रहते हो, यहाँ पर यहाँ से चल रहे हो, वहाँ से चल रहे हो, तो किसी लड़की को भी किसी की चीज़ पे कमेंट बोल दिया, ये भी एक हैरेसमेंट में आता है. चाहे वो कोई भी स्टूडेंट, चाहे सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, उनके उसके बातों से नाराज़गी हो, बीच में लड़ाई झगड़े हो, हार्डशिप्स हो, ठीक है, ये सभी एक्ट्स जो हैं ये रैगिंग में आते हैं. कोई भी एक्शन, वेदर इट इज़ वर्बल एक्शन और इट इज़ इन राइटिंग, जिससे एक स्टूडेंट का मेंटल हेल्थ खराब हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, स्ट्रेस में आ जाए, वो भी रैगिंग का एक हिस्सा है. गाइडेंस एंड काउंसलिंग, केयर एंड काउंसलिंग हम करते हैं कि कोई भी हम जो ऑफिशियल लेटर आती है कि IFS की कोचिंग करानी है या KS की कोचिंग करानी है, इसके लिए कुछ वर्कशॉप्स कंडक्ट करने हैं, तो ये थ्रू ASW ऑफिस ही जाता है. स्टूडेंट्स फेसिंग इमोशनल और साइकोलॉजिकल चैलेंजेस. साइकोलॉजिकल कोई स्टूडेंट थोड़ा डिप्रेस हो जाता है पढ़ाई के दौरान, या उसको कोई प्रॉब्लम होती है घर में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, ये ASW ऑफिस ही करता है. जो नए बच्चे होते हैं इनको पता नहीं होता है कि कौन सी स्कॉलरशिप है, कौन सी फंडिंग कहाँ से आती है. आज तो फॉरवर्ड ज़माना, फर्स्ट ईयर बच्चा भी पेटेंट कर सकता है, फर्स्ट ईयर बच्चे को भी ग्रांट की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आप ASW ऑफिस से ही ले सकते हो. हेल्प स्टूडेंट्स विद फी रिलेटेड कंसर्न हॉस्टल वार्डन्स के साथ, तो ये हमारे ऑफिस की है. दूसरी स्पोर्ट्स
یہ ہمارا پچھلے 2 وائس چانسلرس کپ جو ہے اس سال کا بھی پینڈنگ ہے, کیونکہ ہم نے یونیفارمز منگائی تھی کہ وداؤٹ یونیفارمز یہ اچھا نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری اسپورٹس یونٹس میں گرلز اور بوائز ایکولی تقریباً سب, ہمارے ڈین صاحب نے بھی بلڈ دیا تھا, ہمارے ٹیچرس نے بھی بلڈ دیا تھا, اسٹوڈنٹس میں ایون کہ بار آپ کو آفیشیلی ویلکم کرتا ہوں ٹو دس فیکلٹی. آئی کنگریچولیٹ آل دی بوائز اینڈ گرلز. آئی کنگریچولیٹ یو آل ہو ہیو گاٹ دا ایڈمیشن ان دس فیکلٹی آف فارسٹری. میں آپ کو مبارکباد سب لوگوں کو دیتا ہوں. دس از آفیشیلی ٹوڈے. تو سب سے پہلے میں جو بھی ہمارے انسٹرکٹرز یہاں پہ آئے جنہوں نے یہ یہاں پہ پریزنٹیشن کی, اشفاق صاحب سے لے کے ابھی تک جو لاسٹ میں طاہر صاحب نے کیا, آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دیز آل مائی فیکلٹی ممبرس, کیونکہ بہت ایکسٹینسو طریقے سے انہوں نے آپ کو سمجھایا کہ کس کمیٹی کا کیا رول ہے اور کون سی کمیٹی ہمارے یہاں پہ ہے اور کس کے پاس آپ کو اپروچ کرنے کی ضرورت ہے. یہ پروگرام کرنے کا مقصد میرا یہ تھا بیکاز یو آر گوئنگ ٹو دا سیکنڈ سیمسٹر ناؤ, لیکن آپ کو ابھی تک پورا پتہ نہیں تھا فیکلٹی کے بارے میں کہ آپ کے کورس رجسٹریشن کرنے ہیں, کیسے کرنے ہیں, کتنے کورسز آپ کو رجسٹریشن کرنے ہیں, واٹ ڈز 2+1 مین یا واٹ ڈز WL مین جو کورس کے پہلے لکھا جاتا ہے, یا 1101 1102. اینڈ ویری آئی شوڈ سے میٹیکولسلی آپ کو امرجیت صاحب نے وہ پوری اچھی طرح سے بتایا, مینشن کیا کس طریقے سے کیا کرنا ہے. اور یو آر گوئنگ فار دا سیکنڈ سیمسٹر رجسٹریشن, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ اچھی طریقے سے وہ کریں گے اور کوئی غلطیاں وغیرہ جو ہو وہ نہ ہو اس میں بھرنے میں رجسٹریشن فارم میں. اگر کہیں پہ کوئی پرابلم آتی ہے یو کین گو ٹو یور ایڈوائزرس, یو کین گو ٹو یور انچارج اکیڈمکس, جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ بات چیت کر سکتے ہیں.